also the freshers on the second semester once, sometime back, right? And it's a good feel to be there with you all again. I would like the students to raise their hands who are here from the second semester. Raise your hands. Second semester. Right? Fourth semester? Okay, great. And by chance, anybody from sixth semester? All right, I like that. Students of sixth semester, please understand you will have very soon a pre-placement talk with me. Okay? We have two things of our college जो कि साल की सबसे most important होती हैं. One is called the SFRC, State Fee Regulatory Committee meeting, which is a mammoth thing for the college. It's a whole day affair, which is day after on 21st. And on the 27th, we have the JAC, which is the Joint Assessment Committee meeting, which is again the review meeting which happens once in a year. And a lot depends on these two meetings about how the college is to be run for the next year. Because they assess you whatever that has happened in the previous year, okay, since they came last to us. And SFRC decides on a lot of other parameters and like that. Otherwise, मैं आपके साथ pre-placement talk 6 semester students आजकल नहीं करता, because Genpact is immediately ready to come for the placement drive. We have other companies, Wipro and all, absolutely lined up one after the other, who will be coming for the placement drives and to the college itself. So just be ready for all this. But before that, I would definitely love to have an hour or two of an interaction with you. Certain very strong and very strict do's and don'ts in your interviews, because those don'ts and one don't and you are out, and all do's you are selected. It's very simple. So understand all the do's and don'ts before really getting onto this very thing of yours in life, which is a very important and a crucial one. Alright, coming to the point, developing oneself to taste success. Very subjective term, success. Very subjective. Subjective कैसे कि किसी के लिए क्या सक्सेस हो सकता है, किसी के बहुत पैसा पा लेना सक्सेस हो सकता है, किसी के लिए फेम पाना सक्सेस हो सकता है, किसी के लिए कि at the faggot of one's life I'm 60 or I'm 65, I'm still very healthy, and that is the success of my life, that I have remained healthy, etc. etc. तो क्या norm है किसी का? तो एक तरह से being successful is a very relative term, but what I believe so, if you are really happy, of course not today, आज as a student you will be happy, पर अभी तो आपकी शुरुआत नहीं हुई लाइफ की, ये अभी studentship चल रही है. Once you finish with your studentship and then you get into the real chapter of your life, which is your career. And today's generation is not the generation कि आप सोचें that career making is only a boy's, a male's prerogative, as was 2 generations back. Not even in my generation. Most of my friends, their wives, they all are working women. Senior IS officers and all this, absolutely at parity to them. My wife has worked with the Canadian High Commission for n number of years before taking a VRS from there. But definitely my mother was not working. And I don't think so any of my friends, their mothers were working. They were just housewives. From my generation, working of women, it's absolutely an equal prerogative as that of men, because this is a very simple sign of economic development of any nation. जब भी कोई nation develop करता है, अगर आज से मैं समझूं कि मेरी mother और father, my father was 1932 born, my mother was 1937 born. So अगर मेरी mother ने करियर अपना शुरू किया होता तो 1937, 20 years, 21, 1957, 58 में शुरू किया होता. That means 10 years, a decade after India became independent, and India was a backward country at that point of time. Unlike the European countries, unlike America, unlike Japan, unlike Germany and all these countries, it was not a developed country, it was not even a developing country. It was kind of undeveloped, and certain portions of it were underdeveloped. At that point of time, जब आपकी social economic development इतनी ही हुई होती है,
women जैसे आज अफ्रीकन नेशंस हैं, अफ्रीकन नेशंस whether it is Ecuador or it is Madagascar, it is Uganda, it is Kenya, it is Tanzania, आज वो उस स्टेट में है जिसमें इंडिया आज से 40 साल पहले था, 50 साल पहले था. Okay? So we are today absolutely about to be, as Modi ji says, a lot of economic. Like Modi ji is a politician, very regarded politician, but I would say more to him, the economists of India, when they also say, I believe it more, that India is going to be a developed nation, definitely by 2030. And that's a, definitely we can see it is on the cards. Until and unless India किसी war में अपने आप को engage न करे. The moment a country engages oneself into a war, it is devastation. उसकी इकोनॉमी जैसी वॉर खत्म होता है, चाहे वो वॉर 15 दिन चले, चाहे वो 1 महीना चले या 1 साल चले, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल उसी हिसाब से उतने ही साल पीछे जा चुकी होती है. आज आप पूरा मिडिल ईस्ट देख लीजिए, आज आप अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, all these countries, Lebanon, developed countries say at a point of time, and today what is their halat, किस हालत में है वो. Anyway, coming to the point. So this is what I am saying for you, people seated before me, irrespective you are a male or a female student. Your main motto of doing a studies over here is nothing else but to engage yourself into a successful career tomorrow. I'll use it in something when I go there. Thank you so much, Aditi. So, most important, चाहे आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर या मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं थर्ड ईयर के फर्स्ट रो में, main motto of life is to get started into a successful career. तो आपकी सक्सेस किससे आती है? सक्सेस इससे भी नहीं आएगी, वो शुरुआत होगी. सपोजिंग आप गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, मैं आपको समझाऊंगा अभी. गोल्ड मेडलिस्ट हो गए क्योंकि आप बहुत अनसक्सेसफुल रह सकते हैं अपनी लाइफ में अगर आपके अंदर दूसरी क्वालिटीज नहीं है तो. आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू इन सम टाइम. दैट मीन्स आप एप्टीट्यूड में बहुत हाई हो, पर हो सकता है बाकी चीजों में आप बहुत लो हो, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. ओके, सो व्हाट आर दोस थिंग्स दैट मेक्स यू सक्सेसफुल? You think Mr. Yugank Chaturvedi standing before you, DG sir, do you think you are a very successful person? No, I don't think so. I'm still a successful guy. What I wanted to achieve in the life, I think so I was very near to that some good years back. And I'm not today so near to it. I have to really work back again. I have to really dig myself deep inside to get into that feeling of being successful. Successful is nothing but a feeling of accomplishment. आपके अंदर जब एक accomplishment आती है कि oh यार एक अंदरूनी चैन की सुकून की सांस आएगी, feel that day you have succeeded in your mission. Okay? तो अभी आप सब ने अपने उस करियर के पाथ पे जो अभी 2 साल बाद, 1 साल बाद या कुछ महीनों बाद, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स कुछ महीनों बाद, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स कम से कम 1 साल बाद, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अभी से 2 साल बाद शुरू होएगा. बट बिलीव मी, वो रास्ता जो है, दैट पाथ इज नॉट लेडन विद रोजेस. ये बिल्कुल गलत फहमी में आज से हटा लीजिए अपने आप को कि बहुत फूल बेचे होंगे उस रास्ते में. ना ये सोचिए कि कांटों से भरा होता है, बट आपके अंदर की बुद्धि कैसी है, वो आपको कैसे मैन्यूवर कराती है उस पाथ पे, उस पे आपका सक्सेस डिपेंड करता है. So kindly understand it very well, how you have to maneuver your road to success, how you have to work it out, the ups and downs on that road. What all have you remain, content with. अपने दिमाग के अंदर कौन सी चीजें आपको बिल्कुल ही भली भांति रूप से बिल्कुल स्थिर होकर के रखनी है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो. बहुत लोग होते हैं वो चाहते ही नहीं है, एक चाहत ही नहीं होती अंदर. Let me with this because they were close-minded.
माय डियर स्टूडेंट्स, आज से सोचना आप इन दोनों चीजों में से क्या हो। आर यू अ फॉलोअर और आर यू अ लीडर? क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज है कि आप लीड कर सकते हो, या आपके अंदर वो क्वालिटीज है या क्वालिटीज है ही नहीं, आप जिंदगी भर फॉलोअर ही रहोगे। ब्रैग ने, वेरी लीडिंग फिलोसफर, उसने 3 लाइनें कही थी, ईदर लीड और फॉलो, ईदर लीड और फॉलो और गेट आउट ऑफ द वे। या तो लीड करो या फॉलो करो या रास्ते से हट जाओ, क्योंकि तीसरे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है, तीसरा कुछ नहीं होता। ओके, so think about it. What qualities do you have? How do you have to go through it? How do you have to work it out? What is your vision? What is your thought process? कहाँ हैं आप? क्योंकि लगता है बच्चों आपको अभी तो 2 साल हैं, ऐसे फ्लिकर में निकलेंगे 2 साल और आप बिल्कुल उस कगार पे खड़े होंगे कि यू आर जस्ट टू स्टार्ट ऑन दैट पाथ, द पाथ टू सक्सेस, दैट इज द पाथ टू योर करियर. If you become successful in your career, you are a successful person. If you don't succeed in your career, take my words granted, you would not be successful. You won't be called successful. Okay, so let's see what is it all. How do you need to develop yourself? Yeah. Can I have from somebody, please? कोई आएगा? मनीष सर. इसको बीच में इसको आप ऑफ कर दें, प्लीज. प्रोजेक्टर ऑफ कर दें. याद है इसको तो आगे राइट ओवर. You can see that side, left side. Can I get this thing at the back, please? Arman in this picture. इसको नहीं, इसको ठीक है. Few things I would say. एक तो बच्चों अपने अंदर एक चीज ओपन अप रखना. आपके सामने जब आप अपने पाथ पे शुरू होगे, whether I said 2 months or a year or 2 years down the line, maybe somebody does a post graduation, so another 2 years, right? कुछ लोग होते हैं don't minded, वो इस चैलेंज को नहीं ले पाते कि मैं अपने करियर को स्टार्ट करूं, वो पढ़ते ही रहते हैं बहुत लंबे अरसे तक. That becomes not a very positive thing for them. आपने इतना पढ़ लिया कि आपने, हैं बहुत लोग होते हैं ऐसे, they keep on starting and starting. आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने एमफिल की, आपने उसके बाद पीएचडी कर रहे हैं, उसके बाद आप डीलिट कर रहे हैं, राइट? साइड बाय साइड आपने कुछ पिकअप कर लिया. आपने इतना पढ़ लिया कि आपकी एस्पिरेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि मैं उसके पैरिटी में ही कोई चीज पकड़ सकता हूं, उसे बिलो में नहीं लूंगा. जैसे आज n number of companies will pick a fresh graduate. आप लोग भी ध्यान रखिए. You all, these are the things I want to teach before you are interviewed by Genpact. Genpact doesn't take postgraduate guys. They don't want MBAs. वो कहते हैं MBA की एस्पिरेशन अननेसेसरीली ज्यादा हो जाती है. मैं बच्चे को अपने हिसाब से मोल्ड करूंगा. I teach and train him or her as per my requirement. I don't want somebody to join me with pre-aspirations. They don't take MBAs. Or they take MBAs from absolutely like IIMs and all. बिल्कुल highest possible institutes के MBAs पकड़ेंगे. Otherwise they don't take MBAs from what you call not that high level institutes. And then you can do post, full time की जगह part time MBA करो, वहीं पर रहते हुए. They call it learn while you earn. You
You can do simultaneously both the things. So there are a lot of things which needs to be understood and learned. So what I'm saying is, starting yourselves, whatever X time down the line, certain things which needs to be remaining very, very clear at the back of your minds. Number one, आज आप एक गाड़ी निकालते हो, आपको वेकेशन के लिए जाना है अपने मे बी फैमिली के साथ, एंड द फैमिली से चलो युगांक यू डिसाइड. नाउ आई सिट ऑन द स्टीयरिंग, आई मेक my wife, my kid sit in the car. Maybe my pet Pluto also jumps in and is going along with. We are all going. And after having got myself seated on my steering, should I think कि मुझे जाना कहाँ है? Should I do that? या मेरे दिमाग में पहले से होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है? Accordingly I am going, right? ऐसा होता है कभी आपके साथ कि you have to go, supposing you are a driver, you have a car, बहुतों के पास होगी यहाँ पर, ड्राइव भी करते होंगे, चाहे स्कूटर ही हो, बाइक ही हो. ऐसा हुआ कभी कि आप अपने बाइक जो है अपने पिलियन राइट जो पिल पे बैठ गया है, सीट पे उसने किक भी मार दिया है, इग्निशन भी दे दिया है, आप वो सोचते हैं मुझे जाना है. Does it happen? No. जब आप गाड़ी में आपने रिमोट से गाड़ी खोल ली है, अब आप गाड़ी में बैठ गए हो, आपने इग्निशन दे दिया है, एंड नाउ यू आर थिंकिंग वेयर शुड आई गो. नो, आपको ये मालूम होता है मुझे यहाँ जाना है, चाहे आपको आज कॉलेज जाना है सुबह, वो जो थॉट है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये जो थॉट है कि मुझे यहाँ जाना है, दैट इज द थॉट व्हिच विल डेवलप दैट इंपल्स इन यू, दैट रिफ्लेक्स एक्शन उसका क्या है कि आप इमीडिएटली गाड़ी की तरफ जा रहे हो, खोल रहे हो, एंड यू आर गेटिंग स्टार्टेड. सो वेरी फर्स्ट थिंग इन योर लाइफ इज टू सेट your goals and objectives. लाइफ को सक्सेसफुल होने के लिए बगैर गोल्स के मत शुरू करना मेरे बच्चों. डोंट गेट स्टार्टेड जस्ट लाइक दैट. नाउ आई एम अ ग्रेजुएट, मुझे जॉब करनी है, कोई सी भी जॉब पकड़नी है, उसमें चाहे सेटिस्फैक्शन है चाहे नहीं है, सोचा नहीं कंपनी कैसी, क्या कल्चर, दिस दैट, नो नथिंग, क्या लर्निंग रहेगी, मैं इसके बाद क्या जॉब लूंगा, इससे मेरी कितनी रनिंग हो जाएगी, वेयर वुड आई टेक द नेक्स्ट प्लंज फ्रॉम दिस कंपनी टू द नेक्स्ट वन. यहां मैं एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करता हूं, मेरा गोल पर वहां पहुंचना है. फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरा गोल है यहां से लंदन पहुंचना, and not by flight. Why there is some noise here, please? I want pin drop silence, please. My aim is, for example, that I want to go from Delhi to London. My goal is to reach London by road. Now this is my goal. Do you think मैं घर से गाड़ी उठाऊंगा और चल दूंगा? Right? मेरे को यहाँ से त्रिवेंद्रम तक जाना हो, कन्याकुमारी तक जाना, लद्दाख तक जाना हो, मैं गाड़ी उठाऊंगा चल दूंगा. सोच लिया मैंने लद्दाख तक जाना है, लेह पहुंचना है, या मुझे मिजोरम पहुंचना है, या मुझे शिलोंग पहुंचना है, या मुझे तिरुवनंतपुरम पहुंचना है, या कन्याकुमारी पहुंचना है. दैट इज विद इन इंडिया. आई एम एन इंडियन, आई डोंट रिक्वायर एनी अदर पेपर्स, आई जस्ट नीड टू हैव द कार पेपर्स एंड माय ओन पर्सनल आईडी. मैं पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकता हूँ, आप भी घूम सकते हैं. But the moment I think that I have to go to London, what I need to do? मैं रोड से जाना है, अब मेरा गोल है to reach London. What I need to do, अपने गोल जैसे आपका बने, immediately you should set your complete path to reach my goal. This is what I need to do beforehand, and then I should be ready. So what beforehand मैं क्या करूँगा? कौन कौन से कंट्री से मैं गुजरता हुआ जाऊंगा अगर मुझे लंदन बाय रोड पहुंचना है? आई विल गो थ्रू पाकिस्तान, आई विल गो थ्रू अफगानिस्तान, आई विल गो थ्रू इराक, आई विल गो थ्रू ईरान, आई विल रीच टर्की, एंड हियर इन टर्की, that is, this country is half is in Asia, half is in Europe. Place Istanbul.
इस्तांबुल डेड सी, डेड सी के ऊपर जो ब्रिज है उसके नीचे से जो स्टीमर जाते हैं, उस स्टीमर में मेरी गाड़ी जो है बोर्ड की जाएगी और उस स्टीमर से वो अक्रॉस जाकर के जब मैं टर्की के दूसरी तरफ उतरूंगा, नाउ आई हैव एंटर्ड यूरोप। अब टर्की से मुझे दैट इज एब्सोल्युटली साउथ ऑफ यूरोप और मुझे लंदन पहुंचना है एब्सोल्युटली नॉर्थ ऑफ यूरोप। व्हाट ऑल कंट्रीज विल आई बी पासिंग थ्रू? I'll be passing through definitely Italy, I'll be passing through Spain, I'll be passing through France, and France में आकर करके फिर मैं रुक जाऊंगा, बाय रोड नहीं जा सकता, गाड़ी तैर नहीं सकती, ना उड़ सकती, फिर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आ जाएगी इंग्लिश चैनल, मुझे फिर से वहां पर ही करना पड़ेगा। सो मुझे सारे एंगेजमेंट्स अपने पहले से ही करके रखने हैं, मुझे पहले ही अपने पेपर्स पाकिस्तान एम्बेसी से, अफगानिस्तान एम्बेसी से, इराक एम्बेसी से, ईरान एम्बेसी से, टर्किश एम्बेसी से अपने सारे पेपर्स पे स्टैंपिंग्स लगवानी है that I'm on a road trip, on an excursion trip to London, I want to do this adventure and they would allow it, and then I would be doing how to get my car boarded in a steamer at Dead Sea and at the English Channel. I will reach London if I have done this homework. Same way, when you set your goals and you have done your homework, you have done your right thing. आपने अपना काम बिल्कुल ढंग से कर रहे हो। अब मैं कब पहुंच पाऊंगा? मेरी स्किल्स पे भी डिपेंड करेगा ना। हाउ डू आई ड्राइव? पता चला मैं यहां से अभी पाकिस्तानी पहुंचा था, मैंने वही एक्सीडेंट मार दिया तो गाड़ी में बैठ गई। तो मेरे गोल सेट है कि मुझे लंदन पहुंचना है, उसके लिए मुझे क्या काम करने हैं वो मैंने सेट कर लिए, और अब मेरी स्किल्स, मेरी खुद के जो हुनर है वो अब काम आएगा। ये मेरे सारी चीजें थी, जरूरतें थी, जरूरतें मेरे पास हैं, जरूरतें मेरे हाथ में है, मेरी जेब में है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, परंतु मेरे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि मैं ड्राइव कर सकूं। आई विल बी एबल टू रीच। अब मुझे अपना सेट करना पड़ेगा। When I'm passing through Pakistan, not a very friendly nation to India, not a very friendly nation to India. Again, ISIS यहाँ पर कुछ एरियाज में है, नदर में मैं बिल्कुल बोला रास्ता ना लूँ, मैं सदर्न इराक से होता हुआ जाऊँ। I do not want to be in touch or be confronted by the Mujahideens or by the ISIS in the northern part of Afghanistan or even in Turkey and all, or in Iraq also. So I will be making my routes, maybe बेशक मुझे कुछ किलोमीटर्स 100-200 ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, परंतु मैं रिस्की रूट से नहीं होते हुए I'll be going my routes where my driving would be congenial and safe. Understand? The very first thing is you need to set your goals. Set your goals. Number 2 is, once you have set your goal, make your plan. So I planned it. मैंने सारे वीजास लिए, सब कुछ किया, सब प्लान कर लिया। This is now very important, आपका हुनर आएगा, which is stay determined. Focused. Once you have set your plans, now is your main thing. आप ऑलरेडी ग्रेजुएट होंगे, जैसे मेरे पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस होगा, which gives me the right to drive internationally. I'll have the international driving license before setting to London, not just the license which can allow me to drive within India. मैं अथॉरिटी से, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से इंटरनेशनल लाइसेंस ले चुका हूँगा। ओके, जैसे आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो डिग्री आपके पास होगी, which proves this thing कि आप इस वाले काम को कर सकते हो। जो कंपनी आपको हायर करेगी वो मिनिमम एक ग्रेजुएट्स को हायर करती है, तो हायर करने से पहले आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, हायर ही नहीं करेगी। अभी आप अंडर ग्रेजुएट हो, अभी नहीं करेगी हायर। ये जो बच्चे थर्ड बैठे हैं यहाँ पर 6th सेमेस्टर के, they are only to be hired, not you. They were also not hired last year, the year before that. So same way, set, determined and focused. This is very important.
determined. आपके सक्सेसफुल होने में दो चीजें बहुत अधिक जरूरी होती हैं, remaining determined and having a very strong self-belief. Determination and self-belief are very important. What's self-belief? आपको अपने ऊपर, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। आत्मविश्वास होना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपके तरफ के अंदर आपका खुद के विश्वास अपने प्रति ही डगमगा गया तो आप सवाल ही नहीं उठ सकते कि सक्सेसफुल हो जाए। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। जब पीछे वर्ल्ड कप हुआ, सभी क्रिकेट देखते हैं, इंडिया फाइनल हार गया, नॉट एक्सपेक्टेड इट वॉज, राइट। कहीं पर उसकी डिटर्मिनेशन और उसके फोकस में गड़बड़ाहट आई एंड दे लॉस्ट दैट। अदरवाइज जो उनका गोल था वर्ल्ड कप जीतना, बिल्कुल उसके लास्ट मोमेंट तक पहुंचने भी नहीं जीत पाए। एंड दे वर जस्ट एट पैरिटी विद any other frankly speaking team, because only one team takes the cup. They might have taken the money. तो कितने मनी मिला हो रनर अप को? I don't think so कि उसने किसी भी खिलाड़ी को वो सुख और सुकून दिया होगा जो उसे वर्ल्ड कप उठा करके ही मिलता। All of them were looking extremely dejected in the dressing room, knowing this fact that they have already won as runners-up as crores and crores of rupees, but still they were dejected because they could not win the World Cup, which was their goal. They missed their goal. So, at the same time, certain teams like that of Afghanistan, if I am not mistaken, जिन्होंने वर्ल्ड कप अच्छी तरह देखा होगा, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो, स्कॉटलैंड, ये दो तीन टीम्स ने बहुत ही आश्चर्यचकित किया। Established teams like South Africa and England, they were beaten by these teams, Scotland and Afghanistan, and they rose up to the semi-finals kind of a stage. So that is something because they were focused, they were determined. सोचो वो पवेलियन से ये टीम सोचकर निकले, अरे यार आज साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, हम कहाँ इनसे जीत पाएंगे, जहां आपकी सेल्फ बिलीफ अभी खेलने से पहले ही खत्म हो चुकी हो, आप जीत ही नहीं सकते। और ये सोचते थे वो अपनी पवेलियन से 11 खिलाड़ी होते हैं, देखा जाएगा बॉस बड़े से बड़ा खिलाड़ी होगा, लेट अस गिव आवर बेस्ट, व्हाई कांट वी आल्सो विन। विद दैट फिलॉसफी दे डिड विन। So this is where the difference is between a successful person and an unsuccessful person. A successful person will always have a very strong belief that yeah, I can do it. Why can't I not do it? I would do it. The moment you get enveloped by such thought processes, nobody can stop you from not succeeding. That is for sure. Okay? So remain determined, remain focused, have a very strong self-belief. Remain surrounded by positive people. This is another very important thing. जहां आप एक लंबे अरसे तक नेगेटिविटी से घिरे रहेंगे, आपके अंदर की proportion to succeed उतनी ही कम होती चली जाएगी। Remain with your friends, remain with your cousins, remain with your family members, and feel so family members are always, your father, mother would always be pushy, not pulling kinds for you. They would always wish you to come up in life. Your peer, sister, brothers would always wish you to come up in life. Your real friends would always wish you to come up in life. So, be surrounded by positive people. Negativity is a kind of मतलब what happens is, ये आपको सबको मालूम है, you are students of sciences, इतनी पढ़ी थी 12th तक 10th तक, positive and negative is equal to negative. So the moment there are two people, one is a positive person and the other one is a negative person, it is always the negative person influences the positive person. Take it for granted. It's better to avoid from negativity because you will be influenced. Take it for granted. The influence will come automatically into you. It's a law of nature.
It's a law of nature. If you're surrounded with a negative person, that negativity will flow into you and definitely it will impact your own positivity, which will start going down, because positive, negative, impact final is negative. Now, this person is also negative. Now, two negatives, don't say they make one positive. Mathematically, it's a different thing. But now they are a stronger negative to influence a group. As a group, that they influence. So, refrain. वैसे भी कोई भी कंपनी में अगर बताऊं आपको नेगेटिविटी चेक कैसे की जाती है, एटीट्यूड से। जब आपको एक जेटपैक आएगा ना, अभी विश्वास करना, वो मान के चलते हैं कि यू आर अ ग्रेजुएट और ये बेसिक स्किल्स आपके अंदर है, इतनी कम्युनिकेशन है, इतना ग्रामर है, इतना ये सब कुछ ठीक है, यू आर हायरेबल प्रोवाइडेड। अभिषेक क्या कहें? ओके okay, that's okay. Yeah, what they will be hiring you on, they'll be checking you on your personal skills, जिनकी मैं अभी मेजर एक बात करूंगा, जो कि आपके सक्सेसफुल होने में उनका बहुत 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 जरूरी है होना। आप गोल्ड मेडलिस्ट हो जाओ आईपी यूनिवर्सिटी के CPJ कॉलेज से, ट्रॉफी जरूर मिलेगी from the college to you. There will be a cash award also being given to you, which we do to all our university toppers. But that, don't mind, doesn't guarantee that you will be successful. Until and unless आपके अंदर दूसरी क्वालिटीज भी उतने तादाद में मौजूद हो जितनी उसकी जरूरत होनी चाहिए। ओके, थोड़ी सी भी आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में, आपके आउटलुक में, आपके एटीट्यूड में नेगेटिविटी है, वो बिल्कुल आपके इंटरव्यू के दौरान छलक जाएगी और फिर आप कितने 30 मार्क का, कितने बड़े टॉपर क्यों ना हो, आप सिलेक्ट नहीं होंगे। दिस इज फॉर श्योर। ओके, so remain surrounded by positive people. And during this complete process, till you have reached your goal, learn from your mistakes. This is again a basic philosophy of life. Learn from mistakes, or you may call it failures also. एक saying है बड़ी प्यारी, the road to success and failure both are the same. फेल होने की या सक्सीड होने की जो रोड है वो सेम ही है, सिर्फ ये है कि सक्सेस लाइज अ किलोमीटर अहेड ऑफ failure. Tomorrow I stop working. Hello. जरूरी नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट में सक्सीड कर जाएं। कितने लोग सिविल सर्विसेज में, आपके जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जुडिशियल सर्विसेज में बैठे हैं, पहला अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, पहला पता चला प्रीलिम्स क्लियर हो गए, मेंस तक पहुंचे, बैड लक मेंस रह गया, नेक्स्ट टाइम फिर से अगले साल बैठे, प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर होगा, इंटरव्यू में रह गए। सेम थिंग हैपेंस विद सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज मतलब उसने आपकी सारे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS, योर IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ऑल सर्विसेज है। मलिक को बोलता है इमीडिएटली लैब में, मिस्टर मलिक हो गया, मिस्टर मलिक। सो ऐसा टाइम हेरेबल टू एवरीबॉडी एट द बैक। तो बॉस अपने फेलियर से आप जब तक लर्न नहीं करेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल नॉट बी सक्सीडिंग देयर ऑल्सो। एंड लास्ट आई वुड से टेक वेरी गुड केयर, ये बहुत जरूरी है, ऑफ योर फिजिकल प्लस मेंटल पर गलती कर रहे हो, so remain very careful that you're taking care of you're learning from your mistakes, you're surrounded with positive people, you're taking good care of your mental and physical health. Mental health is equally important, I would say more important than physical health.
Okay, I tell you. I had said it to you some time back. Tell me, you are a potato? आलू हो तुम? या अंडा हो? या आप टी के पत्ते हो, चाय के लीव्स हो? Okay. Just tell me one thing. Are you a potato? This will talk about your mental health. When I say your mental health, this will explain you. Are you a potato? Are you an egg? Or are you chai ki patti? Chai ki patti, okay. No, you say, sir, what are you talking? How is this? Aloo. Take a raw aloo and take it in your hand. Hi everybody. Yep. Take a raw potato, take it in your hand. It is definitely very strong. बहुत दबाया तो भी पिचकेगा नहीं. Right? वहीं पर आप अंडा ले लो. As such, with a very thick wall. बट आपने हाथ में लिया, थोड़ा सा भी दबाया, फचक, पिचक गया. Right? So, and TDs is a different thing. So now I said, you take a bowl, 3 bowls ले लीजिए और उसको अपने फायर पे चढ़ा दीजिए. एक में अंडा डालिए, एक में आलू डालिए, एक में चाय की पत्तियां डालिए. वही potato which was looking so thick, yeah, very hard from outside. जरा सा पानी में गर्म हुआ तो बिल्कुल पिचक गया. Now you can crush it with your hands. Okay? Somebody who externally was looking very strong, बाहर से तो बड़ा strong दिख रहा था, और वो जरा से स्ट्रेस में गया, उसकी mental equilibrium बिगड़ गई बॉस. He's just went down. He's become so succumbed that he can be deprived by anybody. He can be pushed aside by anybody. उसकी complete persona ही खत्म हो गई. It is personality क्या है उसकी जिस चीज को पकड़ करके you crush कर दो and that is banda is finished. Nothing. Same anda which was so as such which was so weak किया और हो गया. Once it's boiled, it's become very hard. You can't do anything with it. You can cut it, but you can't. It's become very hard. So this person with this kind of a personality was looking so weak from inside, but the moment he went through hardships, the moment he went through setting his goals, the moment he went through his plans, he planned it so strongly that he came out even more enriched, he came out even more stronger, and this is what is really required of somebody who wishes to be successful. Whereas tea leaves, this is the third person. The moment tea leaves inside the water, उस पानी जिसका कोई वजूद ही नहीं था, उसने उसको चाय बना दी उन पत्तियों ने. A totally different thing. So this person is innovative. He is adventurous. He looks something, but he finally turns out to be very, very, very different. ये दिख रहा है आपको? ये साफ साफ आपकी पर्सनालिटी दिख रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है. पर जब वो गुजरा किसी चीज से, वो बिल्कुल वीक साबित हुआ. ये वीक दिख रहा है, पर जब गुजरा तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग साबित हुआ. ये बिल्कुल आप इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, और जब ये उससे चीज से गुजरा, उसकी पूरे स्वरूप को ही बदल दिया. So what kind of a personality are you? You have to be at least either of these two kinds of personalities to take care of your mental health especially, and of course your physical health on your road to success. If you are not that, you would fail. And I don't wish any one of you to fail. You all look so bright, with bright futures. और विश्वास करना बच्चों, आपके सामने इतने avenues हैं, इतने avenues हैं कि when I look around, I myself get a shocker कि आज इतनी job opportunities हैं कि you can't even dream of it. तो ये तो आप मान के ही चलिए. जैसे आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, you know any of the Scandinavian countries कौन सी हैं? Let me see who is good in knowledge and geography, including the faculties.
Finland, okay? You are right. You can include in Netherlands too, and mainly two. Okay, it is Sweden and Norway. Bilkul north of Europe. Sweden, Norway, and Finland. These are three major Scandinavian countries. जिसमें आप Denmark और Netherlands को भी include कर सकते हो, but Netherlands not full because the specific upper part has Scandinavian climate. Scandinavian climate is ये वो वाली countries हैं जैसे नॉर्वे में there's a place called Halifax जहाँ पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है. 6 महीने absolutely it remains dark and for 6 months it's absolutely light. Okay, because it is so much near to the North Pole. So Scandinavian countries or countries like New Zealand, countries like Australia, यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ, पेरेंट्स को जहां एक बच्चा ब्लेस हुआ, एक चीज गारंटी है कि कल जब ये बड़ा होगा, इसके पास एक प्लस जॉब होगा. Because these are the countries where there are more job opportunities and lesser population. That is the reason why Indians and Pakistanis, Bangladeshis, these are the ones who have flocked, and of course Indians with their mind, skilled labor. Nothing to beat Indians all over the world. Whether it is IT or it is management, it is anything. आज आप European, American की top companies देखिए, उसके CEOs Indians हैं. Majority of companies, कितनी विचित्र बात है. They have reached that level. So looking at all this, you understand, you also are not having this privilege being in India because the population in India is so vast. But don't think you are a part of that population. जब हम उस population की बात करते हैं, उसकी population, वो जो population है इंडिया की अरबों में, understand my point, उसकी nearly 75% of population is still involved into traditional employment of agricultural and agricultural aligned products, which you are not. You will be getting into the services industry, you will be getting into all such things which has nothing to do with agricultural or the primitive traditional sector. Some of you would be getting into secondary industries, which is the manufacturing sector, but majority of you would be getting into the tertiary industry, which is the services sector. And you have so much of opportunities. मैं अपनी बताता हूँ. Let me tell you about my career. That will throw some light. When I was in class 10th, very interesting, I'm sharing with you. When I was in class 10th, I came in the merit list. वो तो बाद में पता चला, I went with the family to South India for a trip to Rameshwaram and Trivandrum and Kanyakumari. When I was, still remember, when I was at my cousin's place at Jabalpur, that your 10th class result came out, and तब mobiles भी नहीं होते थे. I gave a call to a friend of mine from a public booth in Jabalpur to be informed that Yugank, you have come in the merit list and we all are waiting for you, Kabara Delhi and all this. Okay? फिर मेरे पास friend का ही मैं फिर से phone किया तो उसने कहा Yugank phone करना, बिल्कुल fact बता रहा हूँ. And the teachers they want to speak to you. So I gave a call. और क्या Yugank को fill किए जा रहे forms, आप कौन सा prefer करेंगे? Science, arts, commerce, everything was available for me with my scores. I said humanities, arts. So the teacher tried to convince me. Because साइंस ले लो, आगे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे, किसी भी फील्ड में जा सकते हो, या क्यों अपने आप को अभी से लिमिट कर रहे हो. मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई टेक अप ह्यूमैनिटीज ओनली, आई विल गो इनटू हिस्ट्री और समथिंग लाइक दैट, इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑल. चलो जी, जब मैं बहुत फोर्स किया, दे कांट से नो टू मी. जब मैं आया तो ह्यूमैनिटीज की लिस्ट लगी हुई थी. There's something very personal and quite interesting. I'm sharing it. बाल पब्लिक स्कूल ऑफ व्हिच आई वाज अ स्टूडेंट, लिस्ट लगी हुई है. उसमें मैंने देखा टॉप पे नाम लिखा हुआ युगांक चतुर्वेदी विद द स्कोर. उसके बाद मैंने देखा टक 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 there is something like 48 students. There's no boy, all girls, one after the other. All girls. Ramesh Prakash was the only
male student, absolutely 47th day पे उसके score के हिसाब से, बाकी all females. Now all my friends teasing me, you are तो तेरी ऐश होगी यार. You're going to have a great time and all. मैंने कहा देखता हूँ, boss. 3 दिन रहा उस class में. All the girls knew me. Though we were from different sections, but of course I was quite a guy who was into a lot of things in the school. So knew most of them. So it was something. We had third day I went to my principal, Mr. Bhattacharya. I said, sir, I can't sit in that class. I feel very, I'm not comfortable. So he said, I can very well understand. No hassle, Yugank. Whichever you want to say, I can shift you to that. I said, let me have a look. अब मैं गया, मैंने देखा 3 sections होते, सब ज़्यादा नहीं होते थे, but we had 3 more sections. One was commerce, one was sciences, which had engineering. It was a mechanical drawing section. जो engineering का था, एक था medical. तो जब मैंने commerce का देखा, तो वहाँ जो सारे students थे, वो मैंने list देखी, मतलब somehow मैं यहाँ फिर से छोड़ूंगा class को, because none of my close buddies and जिनके साथ मैं crack करूँगा 2 साल 11, 12, none of them is there. Then I looked at the engineering section. So something very funny I am sharing with you. मैंने कहा ये भी क्या section हुआ? ये उल्टा ही हो गया मैंने जिसका इसमें एक लड़की नहीं है तो भी बजा दिया बिल्कुल. All boys. मैंने कहा no fun in this also. So what I did is I said come on. Not by choice, this is called by default. I chose medical. चलो जी, medical पे आगे my close buddies from 10th, they were all, most of them had joined medical section. अब वहाँ बहुत बढ़िया चल रहा, liking ठीक है, 10th तक पढ़ी थी physics, chemistry, biology and all. It was going further depth में शुरू हो गई पढ़ाई उसकी, no entrance. But boss, वो लोग लैब में चूहों को और मेंढक को काटना होता था ना हर चौथे दिन. That was not my cup of tea. My hands off to surgeons. अपनी एप्टीट्यूड है हर एक का. अपने से नहीं काटा जाता था and it was my bad luck that whenever I would have a rat to cut and dissect, it was always a she rat and she rat was always pregnant. So they were always babies. It was so bad. I can't go with it. Anyway, 2 साल निकाले. I again was in the merit list top. But now I said, enough. अब मैं और further medical में नहीं जाने वाला. Now I sat for any of the medical exams, which all my friends sat. और Ranjan Sandev, Jaideep, Sachin Kapoor, Ranjana Bhattacharya, they are all females and they are top doctors today in India. Top doctors. Who joined AIMS, who joined Safdarjung. There was another thing called University College of Medical Sciences, stuff happening. So that was there. It's taken over by Army Medical College on the ring road near to Delhi Kent. The बहुत बड़ी building and that was UCMS earlier. So Arun Mehra and Arun Baveja, they joined. I still remember the names, they're good friends. And all our doctors have been part of the Rakesh. I left medical. And now before me was, आप समझना, one thing I'll say, must understand, ये बड़ा important point है. Understand your edge. Edge क्या होती है? Anybody wants to say what is edge? Your edge. I say understand your edge. What is your edge? As such, edge is the limit, ठीक है? But इसमें edge बिल्कुल उल्टा है. सोचो. ये competitive advantage होगा. Competitive advantage. Quite to the point. Unlimited. This is what the boy has said. This is USP. Your edge is your USP. विराट कोहली जब उसने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की होगी तो उसने पूछा होगा कोच ने कि यू लाइक टू गेट इनटू बॉलिंग और बैटिंग और मे बी स्किलिंग योरसेल्फ इनटू विकेट कीपिंग. उसको अपनी जो भी अपना स्किल दिखता होगा वहां उसने कहा होगा बैटिंग, राइट? तो उसकी कंप्लीट कोचिंग इन दैट एकेडमी went into him all training as a batsman. Is that clear? आप अपना edge अगर नहीं समझोगे, जो कि अगर अपना edge समझ लिया, तो you are going in that direction. So what I am telling is,
till my class 12, I had already understood one thing, that Yugank Chaturvedi, there is one quality in you, because I used to be going representing my school in all leading competitions in India, not just in Delhi. Used to come back with a trophy, winners, or not less than a runner-up or something, best of the debates in India, etc., etc. So I knew one thing, you are a good speaker, you can excel in anything where speaking is there. कोई ऐसा जॉब मैं नहीं कर सकता जो चुप्पी वाला हो, और तब तक आईटी शुरू ही नहीं होता. There was nothing called a computer, boss. I passed out my class 12 in 1981. In 1981, there is nothing called computer. IT revolution in India came in the 1990s, not India, worldwide. 1990 से पहले कोई कंप्यूटर नाम की चीज नहीं थी दुनिया में. It was only in the 1990s, 1997, 98 में आपकी मोबाइल फोनी, आपकी फैक्सिंग, आपकी ईमेल्स, ये चीजें शुरू हुई 1997, 98 में. उससे पहले कुछ नहीं था. मैंने यूरोप में जब जर्मन कंपनी के साथ था, बिकॉन के साथ, बिलीव मी, हम वहां से इंडिया जब फैक्स भेजते थे, लाखों रुपए लगते थे हमारे, लैक्स ऑफ रुपीज, क्योंकि पहुंचे वो बाकायदा उसके तक का टेलीफोन कॉल चलता था. वो पेपर जा रहा है, उधर से कॉल आती थी, नहीं क्लियर नहीं आया, फिर से भेजिए, फिर आप भेज रहे, बीच में इंटरप्ट हो गया. आज क्या है, आपने एक पेपर में करो, पूरी की पूरी फाइल आपने अटैच की, बटन दबाया, अमेरिका हो चाहे वो निकारागुआ हो, जहां आप पहुंच के 1 सेकंड में. So this is technology. This is called IT-enabled services. This is what is the IT revolution of 1990s, which affected the whole world, and the whole world came under it. You know, absolutely. आपके इंडिया में पूरा जॉब इंडस्ट्री चेंज हो गया. आपके BPOs आ गए यहाँ पर, etc., etc. Don't want to get into those details, but must understand your edge. So when I understood my edge, I wanted to get into media. Now my family. I'm telling you, the road to success. My family, my father, I lost him in 2015, 9 years back. My father was a renowned writer, a poet, a Padma Shri awardee, and a very, very renowned person of Hindi literature. Hindi के प्रखंड कवि, साहित्यकार, कथाकार थे. उपन्यास भी लिखे उन्होंने, और श्री जगदीश चतुर्वेदी का नाम जो है बहुत ही स्थापित साहित्यकारों में लिया जाता है. कि अगर आप कहें कि स्टारवर्ड्स ऑफ हिंदी लिटरेचर, जैसे आज आप क्रिकेट की बात करें ना, तो व्हेन यू टॉक अबाउट लीजेंड्स, तो लीजेंड्स में अगर आप शुरू होंगे CK नायडू से लेकर आप आएंगे अजीत वाडेकर, फिर आप आएंगे सुनील गावस्कर, आप आएंगे कपिल देव, आप आएंगे सचिन तेंदुलकर, आप आएंगे विराट कोहली. खेला तो बहुत होने, पूरी टीम थी, पर ये लोग थे लीजेंड्स, एब्सोल्युटली, जिन्होंने अपना स्तंभ बना लिए. तो जगदीश चतुर्वेदी, was and is a legend of Hindi literature. My mother, Srimati Kaushalya Devi, was an international reputed classical singer, and I grew up purely in an artistic, cultural environment. बहुत ही अलग रहता है environment, believe my words. Right from my childhood, I have only seen painters, writers, journalists, dancers, musicians, these people flocking the house, etc., etc. तो मैं क्या मीडिया ज्वाइन करूँगा? मीडिया कोई आज जो आप चैनल्स देखते हैं, जो मैं करूँ, जॉब की कोई कमी नहीं है आपके लिए. अपना सेट गोल्स करो, प्रायोरिटीज सेट रखो, बी कॉन्फिडेंट. Learn to do these things, and nothing can stop you. Nothing can stop you. Take my words for granted. मेरे टाइम में 1981, nothing. कृषि दर्शन आता था, और आप कैन यू बिलीव इट, संडे की जो मूवी होती थी वो 2 पार्ट्स में आती थी. इंटरवल तक was used to be on one day, next day after the interval. And when it comes to movies from the Bollywood, there used to be one Chitrahar करके आता था for half an hour, which used to flash good songs, which was always on Wednesday, and then it was started on Friday also by Doordarshan 2. There was no channel other than the government Delhi Doordarshan, which used to start at 6 in the evening and would finish up at 11. Then it was increased to 12 midnight, and that's it. That's all in the name of media. So no scope, no options. Anyway, cutting short, I joined
economics honors, Hindu college, remained very vibrant as a college student. Joined Delhi School of Economics. So I spent my 5 years in the most prestigious road of Delhi University, which is Hindu College. Opposite to it is St. Stephen's, and next door is Delhi School of Economics. In that road, I spent my 5 years, which is, I would say, the most plush road of Delhi University. Remained the cultural secretary of Hindu College consecutively for 2 years, did wonders for the college, etc., etc. Went to London, got picked up. That is where I had a shift from academics into corporate. When I was picked up in the London school by Yugank, I just sat for a fun drive, देखने के लिए. पर वो जो उनका ऑप्शन आया, जो सैलरी थी, और वो सब चीजें थी, that was unimaginable, and it could not stop myself from not accepting it, and I accepted it. I remained abroad till 1994. Came back due to some very personal reasons. Otherwise, I don't know where would I have been. Would have been CEO or something of one of the most leading conglomerates in Europe itself. So, but no regrets. No regrets. Worked with my own companies, started my own company, Progress India, and things like that. Won't get into further details, but definitely, I still feel learning is one thing which is a never-ending phenomena, and I still need to learn a lot. So you to all, please must understand, जितना learning के लिए आप बच्चों open रहोगे, उतना ही आप success के करीब पहुंचते चले जाओगे. और एक बार ही success achieve कर ली ना, उसके बाद success begets success. फिर आपको further चीजें मिलती चली जाती हैं. सिर्फ एक बार ही you have to reach to that मुकाम. उस मुकाम तक पहुंचना मुश्किल होता है, but once you have achieved it, it is not impossible, it is absolutely possible. Just you have to follow these things. If you can understand it, stay determined, set your goals, make your plans, stay determined with your self-belief and focus, remain surrounded by positive people, learn from mistakes and failures, take good care of your physical and mental health, understand your edge. Once you do these things, nothing can stop you from not succeeding. Now I'm coming on to certain things which we have half an hour. It's 12:30, we'll wind up around 1. So, any questions from you? I would appreciate अगर आप में से कोई question है. किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. I've got some souvenirs also which I'll give you. Anybody? Yeah. Yeah, that's right. That's the part. Yeah, sure. Yeah, that's the father. I missed, I was half the day I lost him. Believe me, I can still cry. He was all for me in my life. It meant a lot. I said a bye to that job, that plush job जो मैं कह रहा हूँ मैं यूरोप में CEO होता, minimum CEO, जो इंडिया से 87 में बाहर गया हूँ, आज शंखपति है, अरबपति भी नहीं है. I would have been one that, but I said a bye due to some personal reasons totally, and I came back to India for my family. Anyway, so few things. This, remembering my dad, of all the qualities that you develop, एक quality और जरूर develop करना. Please believe in the word called love. Love people around you, love your parents, love your peer group, and the opposite to love is hatred or hate. As you call being positive or being negative, hate को बिल्कुल मत आने दो. Hate is nothing but it is a feeling of being defeated. You hate someone
out of jealousy. You hate someone because what somebody has achieved, you cannot be there. You hate or develop anything of such feelings only because of complexes for that person. Don't develop those things in yourselves. I'll give you a very beautiful example. I might have said it to you if I have ever interacted with most of you. There was this girl, a Christian family. बड़ा प्यारा instance है. Everybody, please. It's a very beautiful instance. You all will love it. आज मैं stories नहीं दे रहा. Otherwise, अपने हमेशा की मैं stories बहुत सारी देता हूँ. आज I'm more serious towards being successful. Anyway, in this. Towards real experiences. Sorry. Towards real experiences. Yeah, it's more of real experiences and what success in fact means, you know. Yeah. और एक और चीज बताऊंगा, एक होती है शॉर्ट टर्म सक्सेस, वो बहुत लोग पा लेते हैं, और वहां से उनका पलायन भी उतना ही जल्दी होता है. When you achieve short term success because you were favorite of somebody in your company, that person because you were favorite of him or her picked you, you jumped so many people and you are being placed here. जबकि आपके अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है कि आपको यहाँ प्लेस किया जाए. आप कुछ ही दिनों में अपनी काबिलियत को दिखाने लगते हैं. You definitely look a very big respect at that profile, which becomes very obvious to everybody. You have a lot of such examples, you know, in politics and all this, where somebody's child, I would not take anybody's name, you all can understand, is being picked up just because he or she is the child of that ex-prime minister or somebody like that, and is made the president of a party and anything like that, without not having any stuff. So what happens? The whole party declines, because it's headed by somebody who is not worth it. So, have the feeling of love. I'll give you a very emotional story. There's a Christian family, and in that family, they have this Christmas coming, and the family is very poor. The father is very marginalized. Father is worker and is earning very minimal amount की घर बिल्कुल, you know, hardships में चल रहे. So when the Christmas is coming, he has a daughter. Wife expired some good time back. So when the Christmas is coming, his daughter is thinking, small little girl, that I should present something to dad, but she doesn't have money. So on the 24th of December, the pre-Christmas night, she gives a present to the father. And father is quite surprised. It's being rolled in a paper and all. It says, Merry Christmas, Dad. He hugs her and he says, where have you got it from? He says, no, Dad, I just thought something, I must give you something. So, this is my gift to you. So, out of curiosity that she might have not committed a theft or whatever, might have gone to a neighbor's house, brought something from there. So out of vague curiosity, he immediately opens the wrapper. The wrapper वो जैसे ही खोलता है उसके अंदर देखता है एक बॉक्स है लकड़ी का. ये तो हमारे बॉक्स है, तो बहुत टाइम से डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, जैसे कभी कभार हम कुछ चीजें रखते थे. तो again, out of curiosity, he immediately opens that box. And the box, as usual, as it was lying on the table for years, it is empty. So he tells the daughter, Beta, box is empty and aap mujhe gift kar rahe ho. So this is an empty box, though you are gifting it to me. She says, Dad, it is not empty because I blew 100 kisses into it. Okay? Merry Christmas. So understand, this feeling of love, this feeling of caring, it is so strong and it is so reflective. Once you do it for somebody, you would be loved back. Once you care for somebody, you will be cared upon. Once you look upon anybody, irrespective of age or gender or any other XYZ reasons, you will always be looked back with even a better sense of respect, regard and love. So maintain those things in yourselves.
This not just makes you a successful person, it makes you a great person too. Not every successful person is a great person. Understand this. A lot of people who are in the media, a lot of people who are in the film industry, they have n number of movies, songs, theatrics, a lot of things to their names, and of course they are successful people, but not that great people. There's a difference between a great person would always have great values also. So improve yourself as a person, because this is the age जिसमें आज भी आप अपने आप को improve कर सकते हो. This is the age, जबकि आप उस एज को क्रॉस कर चुके हो, उसको मैं स्कूल लाइफ ही मानता हूँ. पर अभी भी आप कोशिश करोगे तो आपके अंदर कोई गंदी हैबिट्स हैं, कोई ऐसी वेग चीजें जो कि आपको शेड करनी चाहिए, आपके को उनको अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहिए. वो आपके अंदर नेगेटिविटी लाएंगे, आपको रोकेंगे ही, आपको बढ़ने नहीं देंगे. आप उन चीजों को जितना जल्दी अपने आप को उससे निकाल सको, the better it would be. I will talk here before I get into it. I talk about the exit policy. You know what does this exit policy says? It's very interesting. Okay? This is the goal. Inside this stove, this bowl is being kept on the stove and you make it to heat. अब वो गर्म हो रहा है पानी उसमें. Okay? हमारे ईश्वर की दी हुई कुछ चीजें कुछ जीव जंतुओं के साथ इतनी प्रज्वलित है कि आप इसका जानना बड़ा जरूरी है. अपने आप को थोड़ा अच्छा रीडर्स भी बनाइए. स्टार्ट रीडिंग समथिंग एवरी डे. मेक इट अ हैबिट एज आई हैव. If not every day, but make it a habit that must read something before you sleep, so that there's some addition to your knowledge, to your whatever. Okay. So there's very few creatures in the world who can acclimatize themselves, adjust themselves according to the temperature to a great extent. Snakes are one. A lot of people say polar bears. No, polar bears are not. They can bear only to winters, to cold. Bring them to heat, they will immediately collapse and die. Okay. Snakes are the ones. So snakes are reptiles. So all reptiles have a very strong tendency of acclimatizing themselves to Frog. Frog is the one, of course, which is the one which does it the best. Okay. Now you put a frog inside this water. मेंढक एक ऐसी चीज है जो कि अपने आप को टेम्परेचर के साथ भयानक रूप से एडजस्ट कर लेती है. नॉर्मल टेम्परेचर था, मान लो आपने इसके अंदर एक मेंढक को डाल दिया और पानी को ऑन कर दिया. अब पानी गर्म होना शुरू हुआ. You know one thing, the water starts boiling at 100 degrees and water become ice at 0 degrees. So now it is normal temperature would something be something like 25 degrees, 28 degrees. That is the normal temperature. ये बढ़ना शुरू हुआ heat से, and अभी 50-60 डिग्री तक frog is comfortably lying in the water. जहाँ 60 से बढ़ना शुरू हुआ, तो थोड़ा सा uncomfort सा हुआ, and frog adjusted itself to the climate, to the temperature of the water. उसकी heat से उसने अपने आप को adjust किया. अब टेम्परेचर बढ़ता गया, आप बंद नहीं कर रहे, फुल स्पीड पे आ गए. टेम्परेचर रीचेज 100 डिग्री एंड द फ्रॉग इज लिटिल अनकंफर्टेबल. अपनी पूरी एनर्जी लगा करके उसने अपने आप को फिर से और एडजस्ट किया. इट इज स्टिल अलाइव. इट्स स्टिल ऑन एंड नाउ इट इज एट 120, 140. नाउ इट इज रीचिंग अ टेम्परेचर कि अब जो मेंढक है वो अपने आप को फर्दर एडजस्ट नहीं कर पा रहा. ही वांट्स टू जंप, बट उसके अपनी सारी एनर्जी जो है वो एडजस्ट करने में लगा दी. ओके. द कंप्लीट एनर्जी ऑफ दैट फ्रॉग इज बीइंग वेस्टेड इन एडजस्टिंग इटसेल्फ टू दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन स्टेजेस. And now he wants to jump out, which he can jump out easily. One flop and it is outside the water.
which he could have done much earlier, but wants to do it now. When it is too late, he doesn't have the energy to jump out. So he dies a bad death. This is called the exit policy syndrome. Must know when you should exit out of something, whether it's a job, whether it's X thing, it's Y thing, it's A thing, or it's B thing, until unless it is too late. The moment it is too late, you have already divested yourself into it, and you have lost that period where you could have, if taken that plunge at that point of time, you would have been in a much better state. Like here he is dead. In all of our case, including myself for example, we won't be dead, but definitely would have lost a lot of our times, a lot of our other things into divesting into things which did not turn out to be useful, etc., etc., etc. So, when I say you have a thinking, you have a philosophy, or you have, for example, any kind of an ideology कि जहाँ आप किसी को थोड़ा सा नीचे रूप में देखते हैं, कहते हैं jealousies हैं, आप में complexes हैं, etc., etc. All these things अगर आपके अंदर हैं, please try exiting yourself from these things to be the right person who can take the road to success. Till you don't bring in those values, बताओ होता क्या है? I tell you one thing. Quiet please. I will free you in the next 20 minutes. 12:40, 1 o'clock, you will be free. Don't wish to delay your lunch. And I have to have a massive hectic day ahead. As I said, we have the SFRC day after. Understand, all of you, quiet please. I'll come straight now to 4 things which I might have spoken earlier. I would again impress upon the same things. इसके बगैर नहीं मिलेगा. I would give you an example. The 5 guys sitting from the 6th semester, जहाँ से मेरी आपसे प्री प्लेसमेंट टॉक शुरू होगी, मैं वही बात कर रहा हूँ सबसे. जो फाइनली चाहे वो फर्स्ट ईयर का भी बच्चा हो, आपने क्यों ज्वाइन किया है? Why are you studying? किसी भी चीज के पीछे एक मोटो होता है ना. आज आप गाड़ी में अपने स्टीयरिंग पे बैठ करके आप अगर बाई चांस कनॉट प्लेस जा रहे हो तो ऐसे थोड़ा कनॉट प्लेस जा रहे हो. कुछ तो होगा कि वहां जाकर करके you have to meet your friend and sit in Burgos and have a cup of coffee, or you will be going to a mall and will be picking something from a showroom or something. Just like that तो कुछ नहीं होता ना. हर चीज के पीछे कोई ना कोई मोटो होता है, कोई मोटिव होता है. Without motive there is no action. Every action has a reason. It is the reason which gives you the impulse, the reflex to do that action. No action is without any this thing. So, understand my point. Just that one is So, imagine, आप में से majority of you would be doing your, I would say all of you. आज से 10 साल पहले की बात अलग है. जो मैं मदर का एग्जाम्पल दे रहा था, she was a housewife. My wife was working lady. And things like that. So from my generation, women are also working. And you all have to work. It's not कि earlier आप graduation क्यों कर रहे हो? Because you will have a tag here, I'm a graduate, and you will get a good spouse. Right? आज बहुत boys भी कर सकते हैं इस चीज को, not just females. पता है कि मेरे अच्छी खासी plush business चल रहा है. Join तो मैंने dad का business ही करना है. I don't want to take the name of that university, but when